Tripway or staircase phenomenon. Tripway or staircase phenomenon. A series of continuous twitch. We have discussed in the previous class. Muscle twitch means what? One contraction and one relaxation togetherly called as what? One twitch. A series of continuous twitch due to continuous stimulus. If the stimulus will be continuously approaching, then the twitch will also continuously occurs. A series of continuous twitch are due to continuous stimulus in which the first few are of increasing amplitude. Increasing amplitude means जैसे बार बार कंटिन्यूअसली स्टिमुलस आएगा ना, ये जो ट्विच है इसका भी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम, फर्स्ट फ्यू ओनली. मतलब जैसे आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा आपका बॉडी टाइट होता है तो एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से नहीं हो पाता है, आपका बॉडी लूज नहीं होता है, तो लूज होने के लिए टाइम लगता है. लेकिन अगर बार बार आप कंटिन्यूअसली वही उठक बैठक लगाएंगे या डंबल उठाएंगे गिराएंगे, तो कंटिन्यूअसली करने से क्या होता है, कुछ देर तक ये एफिशिएंसी बढ़ता जाता है ना, उसके बाद फैटिग हो जाता है. तो इसीलिए मैंने लिखा है the first few are of increasing what na amplitude. This increasing amplitude by means of stair. Stair का मतलब क्या होता है ना, to go to the height by means of the stair. तो यहाँ पे भी stair की तरह ये increase कर रहा है, but at particular level तक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, fatigue हो जाएगा. And that fatigue is due to the deposition of what? Lactic acid. So we are coming to the last and number 12. Rigor mortis. This is supposed to be the actin and this is supposed to be the myosin. इसको हम बोलेंगे क्रॉस ब्रीज. This is called as cross breeze. The cross breeze formed between the actin and myosin when the ATP will be added here. When the ATP will be added here, gives rise to what? Nerve breakdown of complex. तो कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन कब होता है? एक्टिन मायोसिन ब्रिज और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स will be break because of the presence of ATP or because of absence of ATP. So when the ATP will be bind with the myosin, that leads to the breakdown of the complex. And death के बाद क्या होता है ना, ATP पूरा खत्म हो जाता है, ATP फॉर्मेशन पूरा स्टॉप हो जाता है. So there is non-availability of ATP or availability of ATP. Because of the non-availability of ATP after death, there is no separation will takes place. ये जो क्रॉस ब्रिज है वो सेपरेट नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा. ब्रेकडाउन is because of availability of ATP. So after death
क्योंकि एटीपी अवेलेबल नहीं है, इसलिए सेपरेशन होगा कि नॉन सेपरेशन? तो नॉन सेपरेशन मतलब मसल्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहेगा या रिलैक्स होगा, इसीलिए मसल्स टाइट हो जाता है। तो डेथ के बाद मसल्स जो टाइट हो जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉज। ठीक है, तो टाइटनिंग ऑफ मसल्स ड्यू टू नॉन सेपरेशन ऑफ actin myosin complex due to non-availability of ATP and creatine phosphate after death. You must have to remember कि ATP hydrolysis in presence of water gives rise to what na ADP plus inorganic phosphate with the release of what na energy. And the enzyme responsible for this is called as what na ATPase. So ATPase enzyme will break down the ATP into ADP plus inorganic phosphate with energy. And ATP formation कैसे होता है ना, ADP plus creatine phosphate. And this ADP plus creatine phosphate, ADP के पास दो फॉस्फेट है और एक फॉस्फेट चाहिए, कौन फॉस्फेट डोनेट करेगा, creatine phosphate will donate the phosphate to the ADP, so that will change into ATP and the creatine will release. And इस creatine के बारे में हम लोग excretion chapter में पढ़े थे, कि creatine is to be excreted out through the urine. तो आपका बॉडी का मसल एक्सरसाइज जितना ज्यादा होगा उतना एटीपी आपको जरूरत पड़ेगा। एंड एटीपी फॉर्म कैसे होता है ना, बाय मींस ऑफ एडीपी प्लस क्रिएटिन फॉस्फेट, मींस मोर द मसल्स एक्सरसाइज, मोर द वर्क, मोर द रिलीज ऑफ क्रिएटिन। क्लियर? तो इसीलिए ब्लड में क्रिएटिन लेवल इंक्रीज करता है इफ यू आर डूइंग हेवी एक्सरसाइज, फिजिकल लेवल मोर। एंड क्रिएटिन अगर डिपॉजिट हो जाएगा ये हार्मफुल है, ये तो वेस्ट है, ये तो टॉक्सिक है। ठीक है, तो इसीलिए डेथ के बाद क्या होगा ना, एक तो जो रिजर्व एटीपी था वो भी खत्म हो गया एंड एटीपी फॉर्मेशन भी स्टॉप हो गया। तो इसीलिए क्रिएटिन फॉस्फेट के एब्सेंस की वजह से प्लस एटीपी के एब्सेंस की वजह से क्या होता है ना, नॉन सेपरेशन ऑफ एटीपी। इसलिए मैंने लिखा है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट, नॉन सेपरेशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? We are coming to the mechanism of muscle contraction. तीसरे चैप्टर का नोट थोड़ा सा देखिए तो मसल्स मैंने कितना पढ़ाया था वहां पे, इसमें दिखा दीजिए। अगर नहीं है ये चाहिए तो ठीक है, समझ गए। मैकेनिज्म ऑफ
muscle contraction. You must remember this diagram. याद है ये diagram? This is what? H. This is what? A. This is what? I. This is what? Z. This is what? O. And here it is the M line. Now, this is the thin myofilament. Thin myofilament मतलब actin या myosin? Actin. And this is the thick myofilament. And that is called as myosin. And this is the portion between two Z line called as what? Sarcomere. Clear? अब हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट का डिस्क्रिप्शन. पहले आते हैं एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट is formed of three different type of protein. Which actin? F actin. Then troponin and tropomyosin. So let's see. it actin filament यहाँ पे हम लोग जो thin myofilament actin filament देख रहे हैं वो देखने में actually कैसे है? These are actually the single protein called as G actin. G stands for globular actin. तो ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर है कि पॉलीमर है? मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ प्रोटीन जी एक्टिन. ये जी एक्टिन अभी पॉलीमराइज होगा. Now this is called as what? Now F actin or fibrillar actin. इस फाइब्रिलर एक्टिन के ऐसे लूप पे और एक प्रोटीन प्रेजेंट
and that protein is called as what? A tropomyosin. And here another protein is present. Now see, this is A-factin. This is A-factin. A stands for what? Fibrillar actin. A-factin polymeric है कि monomeric है? Polymeric. ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, this is tropomyosin. ट्रोपोमायोसिन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? डाइमेरिक दिख रहा है कि नहीं? And this is the protein called as troponin. Troponin आपको ट्रिपलेट दिख रहा है? So which is polymeric, which is dimeric, which is triplet? You need to remember. So this is the structure of an actin filament. The actin filament made up of three different type of protein. Now this troponin, which is triplet, is to be available in three different form. Number one is TPT, number two TPC, number three TPI. T stands for tropomyosin. C stands for calcium. I stands for inhibitor or inhibition. So this is the structure of an actin filament. वैसे हम लोग मायोसिन फिलामेंट में आते हैं. एक्टिन फिलामेंट के बाद मायोसिन फिलामेंट में आते हैं. Myosin filament is formed of meromyosin protein. So myosin filament is made up of meromyosin protein. Look, what is the meaning of meromyosin? And meromyosin जो होता है वो dimeric होता है. Meromyosin dimeric. So let's see the diagram. लेबलिंग में आते हैं. See, in this diagram, see, this is actually head.
ये हो गया हेड, दिस इज एक्चुअली नेक, and this is the tail part. Head contains, as you can see very clearly in this diagram, this is the light polypeptide chain, and this is actually the heavy polypeptide chain. As in this diagram, how many light polypeptide chains are present in total? कितना polypeptide chain light आपको दिख रहा है? 4 दिख रहा है कि नहीं? And how many heavy polypeptide chains are there? 2. इसीलिए configuration क्या होगा? ना H2L4. Heavy मतलब long chain. Light मतलब short chain. Because it is a protein. So it made up of what? Na polypeptide chain. So how many polypeptide chain to form the meromycin protein? Na 6. 4 short polypeptide chain and 2 long polypeptide chain. H2L4. And the head part contains. The head part contains 2 binding sites. As you can see in this diagram, 2 binding sites. One binding site is called as actin binding site. Actin binding site मतलब the site where it is bind with the actin, right? तो actin यहाँ पे bind करेगा. And बाकी जो है वो क्या है? Now this is actually ATP binding site. ATP binding site में present क्या है? ना ATPase enzyme. अभी हम बात कर रहे थे. ATP will be break down by the presence of the ATPase enzyme. So ATPase site where the ATP will be bind will be break down into ADP plus inorganic phosphate because of the presence of ATPase. तो ये जो description हो गया, this is the description of what ना meromycin protein which form the myosin filament. अब देखिए ये एक मायोसिन है, ये दूसरा meromycin है, ये हो गया. तो ऐसे बहुत सारा meromycin प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो आपका ये जो पार्ट है वो थिकर दिखेगा कि थिनर दिखेगा? That is why it is called as thick filament. So thickness is because of what? ना tail part. तो आप अगर पहले वाला डायग्राम में फिर से आएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे ऐसे क्रॉस ब्रिज दिखेगा कि नहीं? दोनों साइड में जहां पे क्रॉस ब्रिज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओ बैंड और ओवरलैपिंग और इंटरडिजिटेशन. क्रॉस ब्रिज और इंटरडिजिटेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट? ना ओ बैंड. तो क्रॉस ब्रिज कहां प्रेजेंट है? ओ बैंड में. ओ बैंड कहां प्रेजेंट है? ओ बैंड का लोकेशन क्या है? ना आउटसाइड द एच जोन और इनसाइड द एच जोन? आउटसाइड द एच जोन. द आउटसाइड the two side of the H zone contains the O band or overlapping band which is the interdigitated between the actin and myosin. तो आप लोगों को मायोसिन फिलामेंट समझ में आ गया? क्लियर है? अगर आप तो लिखेंगे कैसे हम? देखो देखो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देखिए मेरोमायोसिन को कट कर दिए बीच में. कहां पे कट किए एग्जैक्टली वो भी देखिए. One part that cutting is in presence of the enzyme called as what? Na trypsin. हम लोग पढ़े हैं कि trypsin is a protein digesting enzyme present in the pancreatic juice. तो trypsin हम लोग जो चिकन मटन खाते हैं उसमें तो यही मसल्स है. चिकन का मटन का जो मसल्स है उसमें एक्टिन मायोसिन है.
The meromyosin protein is to be digested under the which that is enzyme, the trypsin, and they will convert the two part. ये हो गया एक part, ये हो गया दूसरा part. The first part contains many amino acid or less amino acid. This is called as HMM. This is called as LMM. Heavy meromyosin, light meromyosin. So which contains the more amino acids? अरे हेवी meromyosin में देखिए पूरा हेड आता है, नेक आता है, पार्ट ऑफ द टेल आता है. तो किसमें ज्यादा आएगा अमीनो एसिड? That is why it is called as heavy. Light meromyosin में तो सिर्फ पार्ट ऑफ टेल आता है ना. So in presence of which enzyme the meromyosin cut or that is break down into HMM and LMM? That's trypsin. So we are coming to the description of the muscle contraction mechanism, which is the best explanation theory to explain the muscle contraction mechanism. So we are going to discuss about the sliding filament theory. आप heading जो दिए थे mechanism muscle contraction, यहाँ पे लिख दीजिए by sliding filament theory. क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को बेस करके आपको क्वेश्चंस पूछेगा which is the best explanation to explain sliding filament theory. चार स्टेटमेंट आपको देगा, आपको निकालना है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब एक्चुअली क्या है. ठीक है, so we are coming to the next page. Supposed to be जैसे दे मसल फाइबर, चेक करिए तो हम लोग टी टेबल्स के बारे में पढ़े थे कि नहीं. वहां ट्राइटेड मसल्स में टी टेबल्स के बारे में पढ़े थे या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े थे. ठीक है, कोई बात. जैसे सार्कोलेमा, this is T tables. T tubule stand for transverse tubule. And this is sarcoplasm. And this is one Z line. This is another Z line. मैं अंदर का स्ट्रक्चर अभी नहीं दिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं. जेड लाइन, पैक्टिन, मायोसिन सब देख चुके हैं हम लोग. बस कल इतना ही याद रखना है कि टी ट्यूब्यूल्स in case of skeletal muscle,
टी ट्यूबल्स मतलब ट्रांसवर्स ट्यूबल एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है। आप इसको विजुअलाइज करने के लिए ट्राई करिए। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको? ये भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नली इसको ट्राई करिए समझने के लिए कि ये डिप्रेशन है, बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नली इनर्वेट किया है, दैट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। सो स्केलेटल मसल्स that contains 2 per sarcomere. The number of the T tubules present in the skeletal muscle is 2 per sarcomere. And location exactly क्या है? Exactly located at junction of A and I band. So what is the exact location of the T tubules in the skeletal muscles? Na junction of A band, I band जहाँ पे होता है junction, वहीं पे T tubules present है। तो 2 per sarcomere as I can see in the diagram. Second is cardiac muscle. कार्डियक मसल में 1 पर sarcomere होगा, that is exactly at Z line and smooth. The T tubules are absent. The T tubules are absent in the smooth muscles, present in the skeletal and present in the cardiac. अब देखिए डायग्राम। This is sarcoplasmic reticulum. The sarcoplasmic reticulum will actually associated with the calcium supply, right? Source of calcium होता है sarcoplasmic reticulum. Now in this point here, when the muscle is in the relaxed condition, this is the diagram of a muscle during the relaxation condition, so it is a relaxed muscle. So where is it when the muscle is in the relaxed condition? The calcium are moving into the sarcoplasmic reticulum. The calcium is moving from sarcoplasmic reticulum to sarcoplasm or sarcoplasm to sarcoplasmic reticulum. Yes, from sarcoplasm to sarcoplasmic reticulum the calcium is moving. तो हाई कैल्शियम का सोर्स कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्म में तो कम होता है कैल्शियम, तो हाई टू लो हुआ कि लो टू हाई हुआ? लो टू हाई। एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? That's it. So here the calcium is moving from, that is low to high, so active. So low is in the sarcoplasm and high present in the sarcoplasmic reticulum. तो डायरेक्शन मैंने दे दिया, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लो कहां पे, हाई कहां पे. So that is why the calcium movement in the relaxed muscle from sarcoplasm to sarcoplasmic reticulum which is active. ठीक. The one motor nerve fiber comes to end in the sarcolemma to release the acetylcholine, and उस acetylcholine को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर कहां पे होगा? On the sarcolemma. So this is actually the acetylcholine which is received by, this is motor nerve fiber
These are acetylcholine और न्यूरोट्रांसमीटर जो भी लिखिए. And these are acetylcholine receptor protein or neurotransmitter receptor protein. Present in the sarcolemma. So ultimately, अब देखिए हुआ क्या? Now this is to be received by. These acetylcholine will be received by the acetylcholine receptor protein and create a stimulus or impulse, and that impulse is passes to the T tubules, and ultimately that is reaching what? Reaching the sarcoplasmic reticulum. Reach किया, and it is to be carried through a rod-shaped protein. उस rod-shaped protein का नाम क्या है? ना dystrophin protein. So rod-shaped protein, which is called as dystrophin protein, which carry the impulses from sarcolemma through T tubules to sarcoplasmic reticulum. So ultimately, ये impulse reach करता है sarcoplasmic reticulum के पास by means of a rod-shaped protein called as what? A dystrophin. अब क्या होगा ना, sarcoplasmic reticulum कैल्शियम को रिलीज करेगा. It is from high to low की low to high? तो यह पैसिव होगा कि एक्टिव होगा? So it now become passive, that is high to low. So this results into the increase in calcium concentration in the sarcoplasm. Sarcoplasm में calcium का quantity increase करेगा. So this is the initiation of muscle contraction. And शायद मैंने previous class में आपको बोला था, a motor nerve fiber and a motor organ, that is muscles. One nerve fiber along with one muscle fiber together to form one motor unit. देखिए यहाँ पे एक motor unit हम show किए. This is one muscle fiber, this is one nerve fiber. To form one motor unit. So I'm coming to the next. Complete है? Next. Good. Let's see. Here, this is actin protein. This is
tropomyosin protein. This is TPI. This is TPC. And this is TPT. आप देखिए why it is called as TPT? Because this troponin is binding with what? Tropomyosin. So called as troponin, tropomyosin. Calcium will be increasing in the sarcoplasm right now, right? And that calcium will be bind with what? Troponin C. So calcium bind with the troponin called as what? Not TPC. And the inhibition of the muscle contraction is to be controlled under TPI, inhibition, inhibitor. And ये हो गया this is called as myosin binding site or actin binding site. एक्टिन में होगा मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन में होगा एक्टिन बाइंडिंग साइट. Now this we can say myosin binding site अभी closed है कि open है? Myosin binding site यहाँ पे closed है कि open है? कौन close किया है? Troponin along with the tropomyosin. Yes or no? Troponin and tropomyosin ये दोनों मिलके actually ये myosin binding site को close करके रखा है. Mostly as per NCERT, it is closed by troponin. Troponin actually close करके रखता है. Physically it is closed by tropomyosin, but responsible कौन है ना troponin. Troponin चाहेगा तो tropomyosin को वहां से हटा सकता है. Troponin के वजह से ही tropomyosin वहां पे. Tropomyosin actually closing this myosin binding site. And this is what? Now this is actin binding site. Because this is myosin. So myosin contain actin binding site and actin contain myosin binding site. जब तक ये दोनों ओपन नहीं होगा, एक्सपोज नहीं होगा, तब तक क्या पॉसिबल है? क्लियर? Now the calcium increased in sarcoplasm and binds with TPC. जैसे ही TPC के साथ बाइंड करेगा, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे वो TPC के साथ बाइंड किया, ये जो बाइंडिंग साइट जो क्लोज था, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो क्लोज था, अब ओपन हुआ. And this is only because of calcium binding with the TPC. So conformational change हुआ कि नहीं? So it is the conformational change of troponin and tropomyosin. So conformational change of troponin and tropomyosin leads to exposing of the actin myosin complex. And जैसे actin myosin complex expose हो जाएगा, immediately myosin उसके साथ क्या करेगा ना, bind कर जाएगा. Bind करने के बाद वो क्या फॉर्म होगा, actin myosin complex फॉर्म होगा कि नहीं?
The conformational change of troponin and tropomyosin leads to exposure of myosin binding site and formation of actin myosin complex. Now this is the your actin myosin complex forms. So ultimately the actin myosin complex which is formed here is only because of what na availability of अगर कैल्शियम इंक्रीज नहीं होता तो क्या ये एक्सपोज होता है, क्या ये बाइंड होता है? तो कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ एक्टिन सॉरी ट्रोपोनिन, देखो ट्रोपोनिन का मूवमेंट होने के वजह से ये ट्रोपोमायोसिन भी हट गया. एक्चुअली मूवमेंट किसका हो रहा है? ट्रोपोनिन. So that the tropomyosin is also bind with the TPT. तो इसीलिए ट्रोपोमायोसिन का मूवमेंट होता है. And that gives rise to the exposing of the actin myosin complex, and the formation of the actin myosin complex gives rise to the muscle contraction. Now will start. अभी तो muscle contraction का initiate हुआ था, अब होगा start. So we'll start. Complete है सबका? Yes. Fantastic. हम लोग ऐसे ही स्पीड करते रहिए, फायदा होगा. Steps in muscle contraction. स्टेप है, सो 1 2 3 4 करके आप लिख लें. कहां से स्टार्ट करना है? अभी क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ है कि क्रॉस ब्रिज ब्रेक हुआ है? वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बिटवीन actin and myosin. Step 2, 1 ATP binds to myosin head. 1 ATP binds to myosin head. किस साइड में? ATP बाइंडिंग साइट. जैसे ही ATP बाइंड करेगा मायोसिन हेड के साथ, immediately that gives rise to breakdown or dissociation or separation of actin myosin complex. मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि who is responsible for the breakdown of the actin myosin complex? बताया था ना रैगर मोटिस में ATP ही responsible है breakdown of the actin myosin complex, and that is why after the death due to non availability of ATP the cross bridges do not break. So 1 ATP will come to bind with the myosin head at ATP binding site, that leads to the breakdown or dissociation or separation of
actin myosin complex. Now the fourth step. ATP will be breakdown into ATP plus inorganic phosphate with the release of energy in presence of the enzyme ATPase. ठीक है? अब ये जो एनर्जी रिलीज हुआ उस एनर्जी को अभी मायोसिन हेड यूज करेगा टू अगेन बाइंड विद द एक्टिन एंड टू पुल इट. The energy used by myosin head to bind with actin and pull it. किस तरफ से खींचेगा वो, किस डायरेक्शन से मूव करेगा वो. खींचेगा मतलब वो किस तरफ से मूव खींच रहा है वो, टुवर्ड्स एम लाइन है कि नहीं, टुवर्ड्स एम लाइन. समझ में आया कि नहीं. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप. अभी एटीपी बाइंडिंग साइट दैट व्हाट कंटेन्स एक्चुअली, ये जो एटीपी बाइंडिंग साइट है अभी उसमें क्या प्रेजेंट है, एटीपी है या एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है. बिकॉज़ एटीपी ऑलरेडी ब्रेक डाउन. That ATP binding site has been occupied by ADP and PI. It should be released out. Otherwise, ATP binding site will not expose to another next ATP. क्योंकि खाली ऐसे बाइंड कर गया, एनर्जी को यूज करके ये मायोसिन हेड बाइंड किया, बाइंड करके ऐसे किया ना, जस्ट इसको पूल किया, दिख रहा है, पूल किया. लेकिन ये जो पूल हुआ, वन स्टेप पूल हुआ कि मल्टी स्टेप, बिकॉज ऑफ वन एटीपी, वन पुल विल रिजल्ट. ठीक है. अब ये एडीपी एंड पीआई जो है वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा. उसके वजह से ये जो एटीपी था, जैसे जो मायोसिन था, कंट्रैक्टेड स्टेज में था, अब ये रिलैक्स्ड हो जाएगा. सो रिलैक्सेशन ऑफ मायोसिन हेड बिकॉज ऑफ releasing of ADP and inorganic phosphate from the myosin head. Now the next step will again start. Next cyclic process start होगा फिर से. One ATP again come. जैसे ही ATP एक आएगा फिर से डिसोसिएट हो जाएगा, फिर ATP ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, फिर बाइंड करेगा, फिर खींचेगा, फिर सेपरेट हो जाएगा, फिर लगेगा, फिर खींचेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. ऐसे करते 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 H zone gradually reduce, M line completely disappear, लेकिन A बैंड तो कांस्टेंट है. क्योंकि किसका मूवमेंट हो रहा है, मायोसिन का मूवमेंट हो रहा है कि एक्टिन का. एक्टिन अगर मूवमेंट हो गया तो I बैंड रिड्यूस करेगा, लेकिन मायोसिन जहां था वही है. तो हु इज स्लाइडिंग ओवर. ठीक. तो फिफ्थ स्टेप के बाद सिक्स्थ स्टेप में आते हैं. अब बोल, रुकने के लिए मत बोल. रुकने के लिए डीआरएम में रुक नहीं सकते, है ना. क्योंकि बाकी चैप्टर, बाकी बैचेस में रिप्रोडक्शन चल रहा है और आपका कहां चल रहा है, लोकोमोशन. कितना चैप्टर बिहाइंड है, कितना चैप्टर सोच लीजिए. लेकिन कंप्लीट करना है ऑलमोस्ट आगे पीछे सेम डेट. हम रुक नहीं सकते. पॉइंट नंबर क्या है, 6. ADP and PI released out.
leads to relaxation of myosin thread. Number 7, another ATP binds to myosin and again dissociation. And this process will continue. कब तक कंटिन्यू करेगा? जब तक कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में अवेलेबल है. यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मसल रिलैक्सेशन कब होगा? जब कैल्शियम डिक्रीज करेगा. So when the calcium will decrease in the cytoplasm, the process of contraction will stop and the relaxation will start. So the process will continue till the availability of calcium in the cytoplasm, and that process will continue. Next, हम लोग बात किए थे कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. What are the contractile protein? Means the protein which are responsible for the contraction of muscles. One is actin protein, another is myosin protein. Because the cross breed found in between kids too. Sliding filament theory में ये दोनों ही protein के association है, involvement है. That is why it is called as contractile protein. But what are the regulatory protein? जो regulate करते हैं muscle contraction को, जैसे कि troponin हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया, जैसे कि कैल्मेटुलिन हो गया, एंड जैसे कि डिस्ट्रोफिन हो गया. कैल्मेटुलिन, it is the protein which is present in smooth muscle in absence of troponin. Means यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया कि which protein is absent in the smooth muscles? Troponin. So troponin is a calcium binding protein. हम लोग देखें absent in which muscle? Smooth. तो smooth muscles में अगर troponin absent होगा, who will act as a binding to the calcium? Calmodulin. So calmodulin is also a calcium binding protein. And what is the length? What is the that is length the muscle will contract? Supposed to be sarcomere का length जितना होगा, how much percentage the contraction will be takes place? Now muscle contraction or shortening of sarcomere up to 1/3 to 1/2 of length of sarcomere. Sarcomere का length जितना होगा, उसका 1/3 to 1/2 मसल क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, शॉर्टनिंग होता है. Shortening of muscle during the muscle contraction is of maximum up to 1/3 to 1. ठीक है. एंड क्रॉस चेक कर लीजिए, मसल कंट्रैक्शन में कौन शॉर्ट होगा, कौन लेंथ इंक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा, कौन कांस्टेंट रहेगा, याद है ना?
So during muscle contraction, what will be the event takes place? क्या क्या होगा? A bend, I bend. A bend क्या होगा? Constant. I bend decrease. H zone decrease and disappear. Then O band क्या होगा? क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग तो इंक्रीज कर रहा है ना, sarcomere sarcomere क्या होगा? शॉर्टनिंग हो रहा है कि लेंथनिंग हो रहा है? sarcomere shorten होगा, red line comes close, M line क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा. क्लियर है? Now we are coming to the muscle relaxation. Muscle relaxation. Muscle relaxation will be initiated due to that is sarcoplasm calcium and decreases. So due to the sarcoplasm calcium content decrease, the muscle relaxation will initiate. And ये sarcoplasm में calcium decrease कैसे करता है? Now it is due to three causes. Number one, motor neuron और motor nerve fiber क्या रिलीज किया था? एसिटाइलकोलिन. और वहीं से खेल स्टार्ट हुआ था. Because of the releasing of what? Acetylcholine by the motor nerve fiber. A motor nerve fiber will stop the secretion of what? Acetylcholine. ये है one cause. Second cause, the remaining amount of acetylcholine will be breakdown. जितना अभी एसिटाइलकोलिन बचा हुआ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, that will be breakdown. कैसे? ना acetylcholine in presence of an enzyme called as acetylcholine esterase. याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, उसका शॉर्टकट नेम क्या है ना? ACHE. acetylcholine esterase. ठीक है? So acetylcholine esterase enzyme will be break down the acetylcholine into acetate plus choline. जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उसका भी हमने ब्रेक डाउन कर दिया. पॉइंट नंबर 3,
calcium protein. It is actually a calcium binding protein. Calcium binding protein called as calcium protein present in sarcoplasmic reticulum will actively move calcium from sarcoplasm to sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्म में क्या होगा ना, लो कैल्शियम है, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है ना, हाई कैल्शियम है. तो ये एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? एक्टिव होगा. अब देखिए ये जॉइंट एफर्ट है, ये तीनों जो एक्टिविटी होता है ना, ये कॉज जो है ये एट ए टाइम होता है, एक साथ होता है. एक तो स्टॉप हो गया, एसिटाइलकोलिन रिलीज बाय द motor nerve fiber becomes stopped. Second is the remaining amount of acetylcholine which is present in the neuromuscular junction will be breakdown. Third, the protein, with the calcium present in the sarcoplasm will be again come back to what? Sarcoplasmic reticulum. From low to high by means of the calcium binding protein present in the sarcoplasmic reticulum is called as calcium. So इस तीनों एफर्ट की वजह से एकदम all of a sudden calcium का क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है. It leads to decrease calcium in sarcoplasm and myosin binding site of actin again closed by troponin and tropomyosin. ठीक है. जैसे वो कन्फर्मेशनल चेंज हुआ था ना, तो फिर से अगेन बैक करेगा अपना ओरिजिनल प्लेस में, फिर से जाके उसको ब्लॉक कर देगा एंड द मसल रिलैक्सेशन विल स्टार्ट. So I am coming to the next point. पूरी साइकिल में आते हैं, कंप्लीट है. Yes. So I am coming to the next phase. Fourier cycle. It is actually recycling of lactic acid. क्योंकि lactic acid deposit leads to what ना, fatigue. And आप लोग जानते हैं कि when the glucose will be break down in presence of oxygen, that aerobically will produce the 38 number of ATP, right? Means complete breakdown or complete oxidation of glucose to release the carbon dioxide and water molecule. ठीक है. Now, when the breakdown of the glucose or oxidation of glucose in absence of the oxygen, called as anaerobic respiration, will produce the lactic acid or maybe produce the alcohol. हम लोग पढ़े थे alcoholic fermentation, lactic acid fermentation. We are discussing here the lactic acid fermentation which is takes place in the muscles.
तो मतलब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ कि कंप्लीट, एंड दैट इज व्हाई इट इज ओनली रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम 4 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज. So 1 glucose will produce maximum how many ATP? 38 in presence of oxygen. मतलब complete oxidize हुआ. अगर हमने in absence of oxygen oxidize करते हैं तो ये partially oxidize हो रहा है. Only 4 ATP रिलीज हुआ. अभी भी 34 ATP लैक्टिक एसिड के अंदर छुपा हुआ है. समझे कि नहीं? तो लैक्टिक एसिड will be a waste or it should be recycled. Yes, इसीलिए लैक्टिक एसिड वेस्ट होके निकलता नहीं है, रिसाइकल्ड होता है. That recycling process of the lactic acid is called as what? Co-recycle. Let's see. Name of the scientist है Curie. उनके नाम से हुआ है. Now this lactic acid which is generated in the muscles is in coming to the muscles से कहाँ पे आएगा? Blood में आएगा, ठीक है ना? Now the blood contains the lactic acid. Now that blood lactic acid will be come back to the liver. The liver containing the lactic acid. ये lactic acid कहाँ मूव कर रहा है ना? पहले पहुंच गया liver में through the blood. That liver lactic acid will be divided into two unequal half. That means 20% of the lactic acid, that is we can say 1/5 part of the lactic acid will be oxidized to form carbon dioxide and water. तो 20% ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया. बाकी जो 80% है और 4/5 part, so 80% of the lactic acid in the liver will be converted into glycogen. यहाँ पे नॉन कार्बोहाइड्रेट टू कार्बोहाइड्रेट हुआ कि नहीं? पढ़े थे लीवर का फंक्शन में ग्लूकोनियोजेनेसिस. So 80% of the lactic acid in the liver change into glycogen, and that glycogen will now come into the blood as in the form of glucose. क्योंकि ब्लड में तो ग्लाइकोजन नहीं होगा ना, ये ग्लाइकोजन लिवर से ब्रेक डाउन होकर ब्लड में आ गया, एंड ये ब्लड का ग्लूकोज फिर से मसल में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. समझ में आया? इसीलिए मसल्स में जो ग्लाइकोजन है वो फिर से लैक्टिक एसिड होके फिर लिवर होके फिर से रिटर्न आ जाता है. वो तो वेस्ट नहीं है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होके निकल गया ना. कंप्लीट. Yes, sir. So this is all about the Cori cycle. हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं. अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्केलेटल सिस्टम का.
देखो स्केलेटल सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटर वे में, आइडिया खाली दे देते हैं। Skeletal system is formed of the bones and 206 होता है adult में, and in case of baby or infant it is 300. We will discuss about the 206 number of bone in case of adult with full description. And that is endoskeleton. Number of bone is 206. Endoskeleton is divided into two parts. Axial endoskeleton and second is appendicular. Axial endoskeleton is made up of how many bones? 80 bones. Appendicular made up of 126 number of bones. Axial endoskeleton is again comprises of many. जैसे कि for example first आते हैं skull. Skull में कितना बोन है? 29. हिसाब करिए. Facial bone 14. Cranial bone 8. कितना हुआ? 22. Ear ossicle 3 plus 3 6. कितना हुआ? Hyoid bone 1. कितना हुआ? So 29. Hyoid bone. Appendicular अलग से करेंगे हम लोग. Ear ossicle. Sorry, I'm sorry. मैं कॉल के अंडर लिख रहा हूँ ना. I'm sorry. Skull bone हो गया 29. फिर एक्सियल स्केलेटन में कौन आएगा ना? स्टर्नम. देन आ जाएगा कौन सा? रिब्स. देन आ जाएगा कौन सा? वर्टिब्रल कॉलम. तो 29 स्टर्नम हो गया 1 हो गया 30. रिब्स हो गया 12 पेयर दैट इज 24. कितना हो गया? 54. वर्टिब्रल कॉलम हो गया 26. कितना हो गया? 18. ठीक है ना? स्कल में अगर देखें तो डिस्क्राइब नहीं करेंगे आज. एक हो गया cranium bone, then it is facial bone, then it is head bone, and then it is ear ossicle. Cranium कितना मिले बोला आपको? 8. Facial 14. Head 1. Ear ossicle 6. हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे.
ठीक है।